ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಡವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಯೋಗದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರೀ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾವು ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2020 ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಚಿಂತನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು 2020 ಕೇವಲ 75ನೇ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 100ನೇ ವರ್ಷ. ಅವಾಗ ಯಾರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 3 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಪ್ರಧಾನ ನರೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು 25 ವರ್ಷದ ನನ್ನ ಭಾರತ ಹೇಗೆ ಅದರ ಕೊಟ್ಟವರು ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ದೇಶದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಆಯುಷ್ ಭಾರತ್ ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ ನಿಧಿ ಮೈಸೂರು ದಶಪಥ ರಸ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆದವರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎದೆತ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಶುದ್ಧವಾದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ, ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಯುಷ್ ಭಾರತ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ, ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ ನಿಧಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು, ನಲವಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಒಡೆಯರವರು ಹಾಗೂ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಯ ನಾಡ ದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಧಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ದಣಿವರಿದ ನಾಯಕ, ಯಾವ ಕೂಡ ದಣಿವನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರನ್ನ ನಾನು ಮೈಸೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸರಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತ ಬಸವರಾಜ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಖಾತೆ ಮಂತ್ರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರಿಗೆ, ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮುಖ್ಯೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾದಂತಹ ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಹಾಗೂ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ದೇವೇಗೌಡ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿ ರಾಮದಾಸ್ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. 10 ಪಥಗಳ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು
ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ಯಾವ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನೀವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮಾಧ್ಯಮದವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಮೈಸೂರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Our sincere thanks to Honorable Union Minister Joshi ji. ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿರವರು ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. May I now request Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Basavaraja Bommai ji, to deliver his speech. बोलो भारत माता की, भारत माता की. ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಬಿಂದುಗಳು ಭಾರತ ಕಂಡಂತ ಅಪರೂಪದ ದಿಟ್ಟ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯವನ್ನ ಗೆದ್ದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ, ಗಂತವಂತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರೇ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಿರಿಯರಾದಂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದರರಾದಂತ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರೇ, ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂತ ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರೇ, ಮಂಡ್ಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರು, ಆತ್ಮೀಯರು, ಈ ಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ರಾಮದಾಸ್ ಅವರೇ, ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ಹರ್ಷ ಅವರೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡ್ರೆ, ಆ ದೇವೇಗೌಡರ ದೇವೇಗೌಡರು ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮೈಸೂರು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಬರಬೇಕು ಹೇಳಿ ಅವರು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಳೆಗಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಬರಬೇಕು ಸದಸ್ಯರು ಜೋಶಿ ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಹಳ ಬರಬೇಕಂತಿತ್ತು. ಮಳೆ ಬಂದ್ರು ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಬಾರಿ ಯೋಗಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಾರತ ಹಲವಾರು ಪ್ರಧಾನಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ದೇಶದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ಪಡೆದಂತ ಜನನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತ
ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಭಾರತದ 75 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜಕಾರಣ, ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸಲು ರಾಜಕಾರಣ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ರಾಜಕಾರಣ. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಬಹಳ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನೀವೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು 20 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 20 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ 8 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಅಧಿಕಾರದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಜನರ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. The others have done power politics in 75 years of independent India. But here is one our prime beloved sir, who has completed 20 years office in the office and 8 years as the prime minister. But he has never done power politics. He has done only people and politics for people. ಯಾಕೆ ಬಡತನ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹಸಿವು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದುಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವಮಾನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅಂತವ್ರ ಕೈ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಇವತ್ತು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾನವೀಯ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವ ಭಾರತ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ಭಾರತ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ, ರೈತರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ, ಎಲ್ಲರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೇವಲ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಬೇಕು, ಅವರು ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು, ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ, ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಯೋಜನೆ, ಎಲ್ಲ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿರುವಂತಹ ಯೋಜನೆ, ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕಣ್ಣು ಒರೆಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕಾಲ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹಳ್ಳಿಗೆ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಮಹಾಪುರುಷ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ತಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಉಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಭಾರತ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಅಖಂಡತೆ, ಏಕತೆ, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. $5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಭಾರತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದೆ ಉಳಿಬಾರ್ದು. $1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ $1.25 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ $5 ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 20 ತಾಸು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಜನರ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ. ಒಂದು ಕಾಲ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂತಿತ್ತು, ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ. ದುಡಿಮೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂತ ಇವತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೈಸೂರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಟೂರಿಸಂ ಸರ್ಕಿಟ್ ಇವತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಮೈಸೂರು ಟೂರಿಸಂ ಸರ್ಕಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೈಸೂರಿನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳು ಇಳಿತವೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ KR ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ 89 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 1,000 SC ಮತ್ತು OBC ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ನಾಲೆಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರುವಂತಹರಿಂದ ನಾಲೆಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಂತರ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಬರುವಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕೈಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಬರುವಂತಹ 22 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾರತದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಮೃತ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ 100 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 25 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಮೃತ ಕಾಲವನ್ನು ನೋಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ದು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ದೇಶವನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು. ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Honorable Chief Minister. ಈಗ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು. ಮೊದಲಿಗೆ ಮೈಸೂರು ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸ್ಥಾಪನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನ. Which aims at improving better connectivity, benefiting varied commuters with a relevant and economic transport by pressing the remote, followed by a short video. मैं आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वो फलक का अनावरण करें.
I solicit Honorable Prime Minister Narendra Modi to dedicate the new Center of Excellence building, All India Institute of Speech and Hearing, to the nation by unveiling the dedication stone, followed by a small video. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಿರುವ ದಿವ್ಯಾಂಗರಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೇಂದ್ರದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕೂಡ ಇದೀಗ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಗಲಿದೆ. माननीय प्रधानमंत्री महोदय, प्रार्थना करती हूँ कि वो शिलाफलक अनावरण श्रेष्ठता के साथ लोकार्पण करें. Our sincere and deepest gratitude to Honorable Prime Minister for making this moment remarkable. ಇದೀಗ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟ. ಅದುವೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಸಮಯ. ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರದ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಹರಿಕಾರರು, ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಆತಂಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಚಾಚಿದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. With due respect to the chair, I solicit Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to address the gathering with speech. आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से विनती करती हूँ कि अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें. ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. कर्नाटक के गवर्नर श्रीमान थावरचंद गहलोत जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बसवराज जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी प्रहलाद जोशी जी, कर्नाटक सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और मैसूर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कर्नाटक देश के राज्यों में से एक है जहां देश की आर्थिक
और आध्यात्मिक संपन्नता दोनों के दर्शन एक साथ होते हैं। अपनी पुरातन संस्कृति को समृद्ध करते हुए हम कैसे 21वीं सदी के संकल्प को सिद्ध कर सकते हैं, इसका कर्नाटक एक उत्तम उदाहरण है। और मैसूर में तो हिस्ट्री, हेरिटेज और मॉडर्निटी का ये जो मेल है वो चप्पे पर दिखता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में अपनी विरासत का उत्सव मनाने और दुनिया के करोड़ों लोगों को हेल्दी लाइफ से जोड़ने के लिए इस बार मैसूर को चुना गया है। कल दुनिया के कोटि लोग मैसूर की ऐतिहासिक धरती के साथ जुड़ेंगे और योग करेंगे। भाइयों और बहनों, इस धरती ने नलवाड़ी का वॉरियर सर एम विश्वेश्वरैया जी, राष्ट्रकवि कुंवर जैसे अनेक महान व्यक्तित्व देश को दिए हैं। ऐसे व्यक्तित्वों का भारत की विरासत और विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। हमारे पूर्वजों ने सामान्य जन के जीवन को सुविधा और सम्मान से जोड़ने का रास्ता हम सबको सिखाया है। डबल इंजन सरकार कर्नाटका में पूरी ऊर्जा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज हम यहाँ मैसूर में भी अनुभव कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले सरकार की जन कल्याण अनेक योजनाओं के लाभार्थियों से मैंने बातें की। और जरा यहाँ पर आने में देरी हुई क्योंकि उनके पास इतना कहने को था और मुझे भी सुनने में बहुत मजा आ रहा था। काफी देर में उन्हीं के साथ गप्पे मार रहा था और इसके कारण यहाँ थोड़ा देर से आया। लेकिन उन लोगों ने जो बातें बताई और जो साथी बोल नहीं सकते, उनकी समस्याओं को करने के लिए उनके इलाज के लिए बेहतर रिसर्च को करने वाले सेंटर का आज यहाँ लोकार्पण किया गया है। मैसूर कोचिंग कॉम्प्लेक्स के शिलान्यास से मैसूर का रेलवे स्टेशन आधुनिक होगा। यहाँ की रेल कनेक्टिविटी सशक्त होगी। मैसूर में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये वर्ष आजादी का 75वां वर्ष है। बीते 7 दशकों में कर्नाटका ने अनेक सरकारें देखी। देश में भी अनेक सरकारें बनी। हर सरकार ने गांव गरीब दलित वंचित पिछड़े महिला किसान इनके लिए बहुत सारी बातें की। कुछ ना कुछ योजनाएं भी बनाई। लेकिन उनकी पहुंच
सीमित रही, उनका प्रभाव सीमित रहा, उनका लाभ भी एक छोटे दायरे में सिमट गया। 2014 में जब आपने हमें दिल्ली में अवसर दिया तो हमने पुरानी रीत रस्म तरीकों को बदलने का फैसला किया। हमने सरकारी लाभ को, सरकारी योजनाओं को हर व्यक्ति, हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए जो उसके हकदार थे उसे उसका हक मिलना चाहिए। इसके लिए मिशन पर काम शुरू किया। भाइयों बहनों, बीते 8 सालों में हमने गरीब कल्याण योजनाओं का व्यापक विस्तार किया है। पहले जहां वो सिर्फ एक राज्य की सीमा तक रहती थी, अब उनको पूरे देश के लिए सुलभ कर दिया है। अब जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड है। बीते 2 वर्षों से कर्नाटका के 4.25 करोड़ से अधिक गरीबों को मुफ्त राशन सुविधा मिल रही है। अगर कर्नाटका का कोई व्यक्ति दूसरे राज्यों में भी काम के लिए गया है तो वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत ये सुविधा वहां भी मिलेगी। इसी प्रकार आयुष्मान भारत योजना का लाभ पूरे देश से मिल रहा। इस योजना की मदद से कर्नाटका के 29 लाख गरीब मरीज अब तक मुफ्त इलाज करा चुके हैं। इससे गरीबों के 4,000 करोड़ बचे हैं। अभी मुझे नीतीश करके एक नौजवान मिला नीचे, उसका पूरा चेहरा एक अकस्मात के कारण बर्बाद हो गया था। आयुष्मान कार्ड के कारण उसको नई जिंदगी मिली। वो इतना प्रसन्न था, आत्मविश्वास में भरा हुआ था क्योंकि उसका चेहरा पहले जैसा फिर से बन गया है। उसकी बातें सुनकर मुझे इतना संतोष हुआ कि सरकार के पाई का उपयोग गरीब जिंदगी में कैसे नया आत्मविश्वास भरता है, नई ताकत भरता है, नए संकल्प लेने का सामर्थ्य भरता है। साथियों, जो खर्च हम कर रहे हैं, अगर वो पैसे उनको देते तो शायद वो इलाज नहीं करते। इस योजना के लाभार्थी किसी और राज्य में रहते हैं तो उन्हें वहां भी पूरा लाभ नहीं मिल रहा। साथियों, बीते 8 वर्षों में हमारी सरकार ने जो योजनाएं बनाई उनमें इस भावना को प्राथमिकता दी गई कि वो समाज के सभी वर्गों, समाज के सभी क्षेत्रों को देश के हर कोने हुए हर कोने में पहुंचे। एक तरफ हमने स्टार्टअप पॉलिसी के तहत युवाओं को अनेक इंसेंटिव दिए तो वहीं किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा भी आज लगातार पहुंच रहा है। पीएम किसान निधि के तहत कर्नाटका के 56 लाख से ज्यादा छोटे किसानों को अब तक लगभग 10,000 करोड़ रुपये उनके खाते में पहुंच चुके हैं। अगर हम देश में उद्योगों और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की पीएलआई योजना बनाते हैं तो वही मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए छोटे उद्यमियों, छोटे किसानों
पशुपालक और स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से आसान ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। आपको भी ये जानकर अच्छा लगेगा कि मुद्रा योजना के तहत कर्नाटका के लाखों छोटे उद्यमियों को 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक लोन दिया गया। पर्यटन स्थल होने के कारण होम स्टे, गेस्ट हाउस, दूसरी सर्विस देने वाले साथियों को इस योजना से बहुत मदद मिली है। पीएम योजना से भी कर्नाटका के 1.5 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को मदद मिली है। भाई और बहनों, बीते 8 सालों में हमने सामाजिक न्याय को प्रभावी लास्ट माइल डिलीवरी से सशक्त किया है। गरीब को आज ये विश्वास हो रहा है कि जिस योजना का लाभ पड़ोसी को मिल चुका है उसका लाभ आज नहीं तो कल उसे भी जरूर मिलेगा। उसकी भी बारी आएगी। सेचुरेशन यानी 100% लाभ बिना भेदभाव के, बिना लीकेज के लाभ का भरोसा आज देश के सामान्य परिवार में मजबूत हुआ है। जब कर्नाटका के 4.25 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर मिलता है तो ये भरोसा और मजबूत होता है। जब कर्नाटका के 50 से ज्यादा परिवारों को पहली बार पाइप से पानी मिलने लगता है तब ये भरोसा और बढ़ता है। जब गरीब मूल सुविधाओं की चिंता से मुक्त होता है तब वो राष्ट्र के विकास में उत्साह के साथ जुड़ता है। भाई और बहनों, आजादी के अमृत काल में भारत के विकास में सभी की भागीदारी हो, सबका प्रयास हो, इसके लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे दिव्यांग साथी उनको कदम पर मुश्किलें उठानी पड़ती थी। हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हमारे दिव्यांग साथियों की दूसरों पर निर्भरता कम से कम हो। इसलिए हमारी करेंसी में, सिक्कों में दिव्यांगों की सुविधा के लिए नए फीचर जोड़े गए हैं। देश भर में दिव्यांगों की पढ़ाई से जुड़े कोर्स को अधिक समृद्ध किया जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों को बसों, रेलों और दूसरे दफ्तरों को दिव्यांगों के लिए बनाने पर बल दिया जा रहा है। दिव्यांगों को एक स्थान से दूसरे पर जाने के बाद दिक्कत कम हो, इसलिए कॉमन साइन लैंग्वेज की विकसित की गई है। देश के करोड़ों दिव्यांगों को जरूरी उपकरण भी मुफ्त दिए गए हैं। आज भी बेंगलुरु में आधुनिक विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हुआ है, वहां ब्रेल मैप और विशेष साइनेज बनाए गए हैं। सभी प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करने वाले सबवे में रैंप सुविधा भी दी गई है। मैसूर में तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग एक बहुत बड़ी सेवा दे रहा है। ये संस्थान देश के दिव्यांग मानव संसाधन को सशक्त भारत के निर्माण की आहत बनाने में मदद करे। इसके लिए आज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन हुआ है। जो साथी बोल नहीं सकते, ये सेंटर
उनकी समस्याओं के बेहतर इलाज से जुड़ी रिसर्च को प्रोत्साहित करेगा। ऐसे साथियों का जीवन बेहतर बनाने और उनके सशक्तिकरण के समाधान देगा। और मैं स्टार्टअप दुनिया के नौजवानों को आज विशेष आग्रह करता हूं कि आपके पास आइडियाज है, आप इनोवेटिव चीज रखने वाले हैं, आप जो नया कर रहे हैं, मेरे दिव्यांग भाई बहनों के लिए भी आपका स्टार्टअप बहुत कुछ कर सकता है, बहुत से ऐसी चीजें कर सकता है जो मेरे दिव्यांग भाई बहनों को जीवन के अंदर बड़ी ताकत दे सकते हैं, नया सामर्थ्य दे सकते हैं। और मुझे विश्वास है स्टार्टअप की दुनिया के नौजवान मेरे दिव्यांग भाइयों की चिंता में मेरे साथ जुड़ जाएंगे और हम मिल करके कुछ अच्छा करके देंगे। भाई और बहनों, जीवन और कारोबार को आसान बनाने में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा रोल होता है। कर्नाटका में डबल इंजन की सरकार इस दिशा में बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। बीते 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने कर्नाटका में 5000 किलोमीटर हाईवे के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। आज ही बेंगलुरु में 7,000 करोड़ से ज्यादा के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। नेशनल हाईवे के माध्यम से कर्नाटका में कनेक्टिविटी और रोजगार के हजारों अवसर तैयार करने के लिए इसी वर्ष लगभग 35,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार लगाने वाली है। मुझे खुशी है कि कर्नाटका में डबल इंजन की सरकार होने से ये प्रोजेक्ट तेजी से जमीन पर भी रहे हैं और पूरे भी हो रहे हैं। साथियों, रेल कनेक्टिविटी का तो कर्नाटका को और भी अधिक लाभ बीते 8 वर्षों में हुआ है। मैसूर रेलवे स्टेशन और नागनहल्ली स्टेशन के आधुनिकीकरण का जो काम शुरू हुआ है वो यहाँ के किसानों, यहाँ के नौजवानों सभी का जीवन आसान बनाएगा। नागनहल्ली को सबर्बन ट्रैफिक के लिए कोचिंग टर्मिनल और मेमू ट्रेन के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इससे मैसूर यार्ड पर जो इस समय बोझ है वो कम होगा। मेमू ट्रेनों के चलने से मध्य बेंगलुरु, मांड्या और आसपास के दूसरे क्षेत्रों से रोजाना मैसूर शहर आने वाले साथियों को विशेष लाभ होगा। इससे मैसूर के टूरिज्म को भी बहुत बल मिलेगा। टूरिज्म से जुड़े नए रोजगार बनेंगे। साथियों, डबल इंजन सरकार कैसे कर्नाटका के विकास के लिए यहाँ की कनेक्टिविटी के लिए काम कर रही है, इसका एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। 2014 से पहले केंद्र में जो सरकार थी तब रेल बजट में कर्नाटका के लिए औसतन 800 करोड़ की व्यवस्था हर साल होती थी। कर्नाटका के मीडिया जरा ध्यान रखेंगे। पहले की सरकार हर वर्ष एवरेज 800 करोड़ रुपए का प्रावधान करती थी। इस साल के केंद्र के बजट में इसके लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी सीधे 6 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी। कर्नाटका के लिए रेलवे के 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के पर काम चल रहा है। रेल लाइनों के बिजली मामले में भी हमारी सरकार ने जिस तरह किया है वो सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे। मैं जरा आंकड़ा बताता हूं, आप उसको ध्यान से देखिए। 2014 के पहले 2014 के पहले 10 साल में यानी 2004 से 2014 10 ईयर 10 साल में
कर्नाटका में सिर्फ 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर रेल लाइनों का बिजलीकरण हुआ था, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। 16 किलोमीटर एंड 10 इयर्स हमारी सरकार के दौरान कर्नाटका में करीब 1600 किलोमीटर रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। 16 किलोमीटर इन 10 years, 1600 kilometers in this 8 years. कहां 16 किलोमीटर और कहां 1600 किलोमीटर। यही है डबल इंजन के काम करने की रफ्तार। भाइयों और बहनों, कर्नाटका के संपूर्ण विकास की ये गति ऐसी ही बनी रहे। डबल इंजन की सरकार ऐसे ही आपकी सेवा करती रहे। इसी संकल्प के साथ हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं, हर हमेश तैयार है, और आपके आशीर्वाद ही हमारी बहुत बड़ी ताकत है। इतनी बड़ी तादाद में आप हमें आशीर्वाद देने आए हैं। ये आपके आशीर्वाद आपकी सेवा के लिए हमें शक्ति देते हैं। मैं फिर एक बार आप सबको इन अनेक योजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज कर्नाटका ने जिस प्रकार से स्वागत सम्मान किया है, बेंगलुरु हो या मैसूर हो, मैं हृदय से आपका आभारी हूं। और कल जब पूरी दुनिया योगा दिवस मनाएगी, विश्व जब योग से जुड़ा होगा, तब पूरी दुनिया की नजर मैसूरू पर भी होने वाली है। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
almost around a week that protesters have been protesting against, aspirants have been protesting against this Agnipath entry scheme. There's a lot of damage to property caused by these people, and some parties, some political parties, as well as these so-called aspirants, are justifying this violence to pressurize government to roll back the scheme. What do you think about this, sir? No violence in any civil society can be justified, whatever form of grievance anyone may have. In fact, this entire public or private property belongs to somebody. The public property belongs to all of us who are honest taxpayers. And we are definitely expecting a lot of improvement in the situation, because if our country has to develop and progress fast, which we all are determined to ensure, this kind of destruction and violence is not expected from any citizen, and least of all from those people who claim to be aspirants for joining the armed forces, where discipline is the basic requirement of any aspirant. And sir, at the moment it seems that yesterday we also heard the DMA say that coaching centers and these people are fueling these protests. Now, if they are able to spread the misinformation, do you think there is more effort is required from the government side or the ministry side to reach out to the aspirants and tell them, explain them what the scheme is and what are its benefits? There are two things. Firstly, yesterday's media conference in which the Additional Secretary DMA and the other staff officers of the three services gave out details of the scheme. Today the notification has also been issued, which is very comprehensive. It is very much in detail. In addition, there are people from the media, well-intentioned people, who are spreading the correct narrative to the aspirants. There are always a few bad hats who will ensure that the entire law and order is compromised. This will happen, and we have been seeing such protests in the past also. It is quite tragic this time that it is being targeted at the armed forces or the kind of policy which is meant for national good, which is meant for our national security. So while it was mentioned that there is a segment of people who are misguiding the youth, I am sure in a democratic country and a civil society like ours, there is a law and order mechanism which will investigate into this. And the appeal to all the aspirants who are on the streets is that this violence is not going to take you anywhere. And most important for the people who are on the streets is to understand this is the time to be utilized to prepare, not come onto the streets. And I think there is a segment of good focused individuals who are not on the streets but preparing themselves, and I think those are the people who will finally get into that 25% final selection, because they are correctly focused while the others are not. Sir, this is the second or third time when we are seeing that the government has come out with a reform. Now, the ministry called this Agnipath scheme as a transformative reform, and we had been requiring such a reform for the last 30-40 years to bring down the age profile of the armed forces. Now, every time a reform comes, there's street protest. How do you see that, sir? If you recollect, in 2019, late General Rawat, our CDS, had mentioned once that armed forces are not to be considered a job opportunity. He had considered it is a passion, it is nationalism. And he had said कि अगर किसी को नौकरी करनी है तो वो नौकरी और जगह ढूंढे, but he has to come and serve the nation, he or she, when they come to the armed forces, that is the uniformed fraternity. Every time there is a protest, it could be for various reasons, right or wrong. I am not trying to be judgmental in this. But what is extremely important, that transformations mean changes. So changes are ordered after due deliberation, and thereafter the challenge for the people in the system is to manage the change, and manage that change as fast as possible and as perfectly as possible. So if there is violence which is being perpetrated, that will also have to be controlled so that management of change is done properly.
And sir, last question, sir. Now, do you think that now a lot of announcements have been made and reservations have been done in Coast Guard, DPSUs, paramilitary forces? Would it not have been better and people would have also understood it better, the scheme better, if the reservations and the scheme were announced together at the same time? There are a large number of existing reservations already. Now, what is being done is it is being amplified, and more ministries and more state governments are coming forward to assure the people who are on the streets to cool down their sentiments, to say that everything is not lost. You have not even joined as yet. And we are looking already at people leaving. So we have not even started the scheme, and people are looking at 4 years from now. So whether it would have been better in whichever manner, there can always be opinions about that. And when we look at national security, everything is not announced. When you look at the national security, that is most important. The welfare of the people will come next. Those who are exiting will also have to find their way out. I must tell you, I am one of the officers who is a short service commissioned officer. When I joined the army in 1978, nobody told me that after 5 years what will happen to me. We were 300 of us who joined the army or the training academy. Out of that, only 90 finally stayed in the army and we got permanent commission. So what has happened to the balance? Balance 210 have also settled down somewhere in life. They are not on the streets, and we definitely did not protest the way things have happened today. So when you look at Agniveer, I am a perfect example of that, except that this was in the officer cadre. Even today, we have short service officers, but do you see this kind of protest? So I think it is not justified to say that there is uncertainty of future. You look at any civil stream also, any corporate house, is there any justifiable reason to go on protest because your future is not secure? I think each one of us has to prepare ourselves for future and ensure that we are either in that 25% who's going to stay, or prepare ourselves to go out and settle down and serve the nation even without being in uniform. So thank you very much. Thank you. ये सिचुएशन बहुत दिल्ली में आज जाम का भी सामना करना पड़ा, उसको लेकर के कल कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजर्स ने हमसे 2000 लोगों के लिए परमिशन मांगा था कि जंतर मंतर पर वे 2000 लोग आना चाहते हैं। हमने उनको एडवाइस किया था कि जंतर मंतर पर 2000 की कैपेसिटी नहीं है, हम मैक्सिमम यहाँ पर 1000 लोगों को परमिशन दे सकते हैं। तो बातचीत के बाद हमने उनको 1000 वर्कर्स को लाकर कार्यक्रम करने की इजाज़त दी थी, और कुछ उन्होंने मॉर्निंग में हमें अपने वॉलंटियर्स दिए थे और एक लिस्ट प्रोवाइड की थी बाय नेम। तो हमने उस लिस्ट को उनके वॉलंटियर्स के माध्यम से जो लोग आए थे उनको एंट्री की परमिशन दी। कुछ क्षेत्र में यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम था, बीजीआर था, 1000 लोग आए थे, ये लोग भी काफ़ी अपनी गाड़ियों से आए थे। तो थोड़ी बहुत देर के लिए कुछ राउंड अबाउट पे ट्रैफिक में थोड़ा सा स्लो हुआ था, लेकिन उसके बाद वो तुरंत ट्रैफिक को नॉर्मल कर दिया गया था। ओवरऑल जो लाइन ऑर्डर की सिचुएशन थी आज मोर और लेस नॉर्मल रही। थोड़ा बहुत छोटी मोटी कोई ट्रैफिक का या कोई ऐसा इशू हुआ, लेकिन कोई मेजर इशू नहीं हुआ था। सर, प्रदर्शन स्थल पे दूसरे ग्रुप के लोग भी पहुंचे थे, कुछ इस तरह डिटेन भी किया गया है क्या? इस तरह जो कैपेसिटी है यहाँ की 1000 लोगों की कैपेसिटी है। इसके अलावा जो कुछ वर्कर आ गए थे जो एक्सेस में थे और वहाँ हमारी एडवाइस नहीं मान रहे थे, 144 की धारा ऑलरेडी लगी हुई है,
तो वो पुलिस के समझाने के बावजूद भी नहीं गए, तो कुछ लोगों को डिटेन किया था। इसके अलावा कुछ दूसरे ग्रुप भी आ गए थे, कुछ उन लोगों को भी हमने डिटेन किया है। सर, कांग्रेस की तरफ से परमिशन को लेकर कई तरह का आरोप लगा दिया गया पुलिस के ऊपर कि ये पक्षपात के या भेदभाव कर रही, तो इस तरह के कोई को लेकर क्या आप कहते हैं? परमिशन को लेकर हमें कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा। हमने उनको हमेशा ही एडवाइज किया था कि जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड प्लेस है और यहाँ पर 1000 की कैपेसिटी तक आप कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं। पहले दिन से और आज तक हम लगातार उनको ये कन्वे किया। कल भी हमने परमिशन दी थी यहाँ पर कार्यक्रम की, और इन कांग्रेस ने कार्यक्रम किया था। आज भी हमने यहाँ पर इनका कार्यक्रम हुआ है। इससे पहले इनको जब हमने एडवाइस दिया था तो इन्होंने यहाँ कार्यक्रम नहीं किए थे। तो किसी भी तरह की हमारी तरफ से कोई भेदभाव की बात नहीं है। धन्यवाद सर। Company. I compliment Shri Anand Mahindra, and the Mahindras have always been very progressive and keeping the national interest in mind. You know, in committing to recruit from the pool of Agniveers after their tour of duty with the armed forces, it's a win-win scenario because industry needs young men who are trained with the ethos of the armed forces, which is self-sufficiency, who have that discipline, who have that can-do attitude, and of course with the skills that they earn in this 4-year tour of duty. I know because I have been involved with the corporate world, and these are the kind of people that the corporate world needs. Mahindra is a very good place to work, and I'm sure it will create enormous new job opportunities for these young men who go through the Agniveer program, which they otherwise wouldn't have happened. And similarly, I have appealed to other industry leaders, whether they are really some of the titans, such as the Tatas or Reliance or Adani Group, whether you're just a startup or whether it's a startup which has become a unicorn, or whether it's a legacy business, a family business of many generations. All of these entities, it's in their own interest to recruit such young men in their different kinds of businesses. And of course, it's in the interest of the Agniveers themselves, and it's in national interest. I think more and more such companies and leaders in the business world should step up and make such commitments. पूछने की ज़रूरत नहीं, वैसे बोलिए। मैं आनंद महिंद्रा जी को बधाई देता हूँ। महिंद्रा ग्रुप ऐसे बहुत प्रोग्रेसिव है जो देश के हित में कई बार स्टैंड लिए हैं, और कंपनी बहुत एडमायर्ड है, और ये जो कर रहे हैं ये आपस में बेनिफिट है। महिंद्रा ग्रुप को बेनिफिट है क्योंकि ऐसे युवा मिलेंगे जो ट्रेन हुए हैं हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से। उनका उस तरह का जोश है, उस तरह का जो डिसिप्लिन है,
और जो स्किल्स सीखेंगे 4 साल में। और ये युवाओं के लिए बहुत ही एक अच्छा मौका है, क्योंकि अग्निवीर की ट्रेनिंग होने के बाद ऐसे सारे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगे जो उनके लिए पहले नहीं होते थे। मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड से जुड़ा हुआ था पहले, और मैं जानता हूँ कि इंडस्ट्री ने ऐसे युवा ढूंढते हैं, और ये उनके अपना हित में ही लेना चाहिए। और उसी तरह मैंने अपील किया हूँ कि जो बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो टाटा ग्रुप हो या रिलायंस या अदानी ग्रुप हो, या कोई स्टार्टअप हो, या कोई स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न बन गया है, या ऐसे पारिवारिक व्यवसाय बहुत हैं जो फैमिली बिजनेस, ये सबको मैं अपील करता हूँ कि ऐसे अग्निवीरों को रिक्रूट करने के लिए वो उनका इंटेंशन बताए। अपना उनका हित में भी है, और ये युवाओं के भी हित में है, और देश के हित में भी है। Protest against Agni scheme continuing 5 days. Congress demand a discussion in Parliament, and Congress leader Subodh Kansai said, "If Modi walked the path of Hitler, he will die like Hitler." You see, that comment indicates the mindset of the Congress. It's very mean-minded, very petty to speak so ill of the Prime Minister of the country. It shows their true colors. And Congress is not at all being genuine about this issue. Instead of trying to explain to the masses how it's good for them, Congress is trying to foment their insecurities, trying to spread false information about this scheme, which is endorsed by all the armed forces. It is endorsed by industry. It is endorsed by all right-thinking people. This is the formula followed by countries which have the most successful defense system. So Congress has been exposed. It is no longer a party which is a political party. It's a private limited enterprise where everything is done for the benefit of one family. They are embroiled in all kinds of fraudulent cases. So Congress's blatant insincerity can be seen on the face of it. What they're doing is very bad for the nation. इस भाषा से ही पता चलता है कांग्रेस की मानसिकता। ऐसे शब्दों में देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात करें, ये बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है, और इसीलिए देश में कांग्रेस को बिल्कुल साइड कर दिया है। देखिए, कांग्रेस ये जो अग्निवीर मामला पर जो कर रहे हैं देश के हित में नहीं है। वो जाके युवाओं को समझाना चाहिए कि इनके लिए बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ खुल रहे हैं, और जो देश सक्षम होते हैं उनके अपना रक्षा में, सुरक्षा में, ऐसे ही सिस्टम फॉलो करते हैं कई सारे देश। इसके बावजूद कांग्रेस जाके भ्रम फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। उनका उद्देश्य तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। देश के हित में ऐसे नहीं कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस अभी एक जो नॉर्मल राजनीतिक दल नहीं रही, वो एक प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस बन गई है। एक परिवार के लिए, एक परिवार के हित के लिए विभिन्न प्रकार के कांड सब करते रहते हैं। उनका भ्रष्टाचार पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। वो कोर्ट से बेल पर हैं, तो जो ये कर रहे हैं देश के हित में बिल्कुल नहीं है, और लोगों को ये पता चल गया है कि अगर कांग्रेस कुछ कह रही है तो वो गलत कह रही है। सर, इसी बीच कांग्रेस ने जो चर्चा की, संसद में चर्चा की मांग अब किस? देखिए, जो कुछ वो तो पहले इतने दिन वो नहीं कह रहे थे। इतने दिन वो केवल क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट और प्रदर्शन के में लगे हुए हैं। जो अग्निकांड हो रहा है उस पे लगे हुए हैं, तो उनका इरादा ठीक नहीं है। थैंक यू सर।
add something. Well, we are all of us in the country, and not only country, worldwide, people are noticing that COVID-19 cases are rising absolutely day and night. Well, the various causes behind it is that probably we are not giving that regard to very important all the factors which could increase the incidence of COVID, like wearing of mask at whenever you are in a company of people. Number two, do gaz ki duri, 6 feet difference. Number three, if somebody is coughing or anywhere, he should put his at least hand on his mouth or put a hanky over there. And these are the two most important thing. Then one must have a vaccination done. So one thing very good about this COVID-19 is that in our country, I think nearly more than 95% of the people have been vaccinated. Well, as I said, whenever we have seen people going in the marketplace, in the restaurant, in the function, parties, and other functions, and people will find absolutely dancing together, talking together, and nobody is wearing a mask. And then see if you see the lot of festival taking place, people going in the festival. You see, last sometime there was in the Ganga Snan in our country. Thousands of people get there. Now all hill stations have opened up. We got all the people going to hills, lot of people going to hill station. And I have virtually noted, they say people, whenever they come from a hill station or big Ganga Snan or whenever in the party, definitely some people are out of them come out with history of fever. सर 2 साल के बाद एक बार फिर से बृहद तौर पर ये आयोजन हो रहा है 8वां इंटरनेशनल योगा डे। किस थीम के साथ सर ये आयोजन किया? ये इस बार ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इसकी मूल थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। आज हिंदुस्तान ने परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया को जोड़ लिया है थ्रू योग। योग के जरिए दुनिया को एकत्रित की है। ये है हिंदुस्तान का सभ्यता संस्कृति का सबसे बड़ा शक्ति। और आज इस अवसर पर आप लोगों ने देखा है कैसे सिर्फ देश के अंदर ही नहीं,